वो अपना खुद का हॉस्टेज ड्रामा में फंस गए. मतलब like literally one of my supposed cast members got kidnapped. What? He literally got kidnapped. Hi Santosh. Hi. Hey, hi. I'm doing good. As good as an independent filmmaker can do. It's so nice to see you after such a long time. मैं अभी अपने viewers को बता रहा था that you and I we belong to the same batch, to the same campus, same college, और animation course start किया था. Santosh MP doing a diploma in 3D animation, and now he's landed up being an independent filmmaker. How the hell did that happen, man? Okay, so while I did my course in digital animation, I was mostly interested in pre-production. हाँ. मतलब वहाँ पे क्लासेस बाकी सारे बैच के बाकी सारे स्टूडेंट्स पूछते थे कि हाँ सर माया कब सिखाएंगे और मैं मतलब भाग जाता था वो शॉन के क्या मतलब जो अपना डीन था उसके कैबिन में भाग जाता था ये पूछने के लिए कि सर स्टोरी बोर्डिंग सिखाओ, स्क्रिप्टिंग सिखाओ, मतलब डायरेक्शन सिखाओ. So I was never interested in like the software aspect of it क्योंकि मुझे वो सॉफ्टवेयर से वो स्टोरी टेलिंग मतलब कभी होता नहीं था मुझसे. और वो स्टीप लर्निंग कर्व था. मतलब एक गन मॉडल करने के लिए साला एक हफ्ता लग जाता था. मैं सोचा और मैं मतलब क्राइम थ्रिलर सब बनाने चलूंगा मतलब फिर तो 10 साल लग जाएंगे एक दो से मतलब 10 सेकंड का शॉट लेने के लिए. So I was never कभी एनिमेशन मतलब इनफैक्ट आई यूज्ड टू ट्रेड कि मतलब मैं बाकी लोगों को बोलता था भाई मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए स्टोरी बोर्डिंग कर देता हूँ तो तुम मेरा मॉडल्स बना दो. तो वो लोग वही करते थे, वो मेरा मॉडल बना देते थे, मेरा टेक्सचर बना देते थे और मैं उनको स्टोरी बोर्ड्स बना देता था कि हाँ चलो ठीक है ये तुम्हारा सीक्वेंस है रख लो. Before becoming a filmmaker, you also had your own set of experience working as a professional storyboard artist. And you worked on Little Krishna, that was the product of Big Animation. That probably later on got converted into Reliance Animation or something. Yeah, Reliance was big. Yeah, Reliance was Big Animation. Yeah. All right. So please tell my viewers about this journey. ये हुआ क्या और क्या आपका experience रहा working as a storyboard artist? So क्या हुआ था कि someone from Big Animation had come to Picasso, that's our institute. So they had come in for a campus placement program. And I was the only person who was doing storyboarding in the entire batch. अब क्या हुआ कि like a lot of other people got drafted into texturing or modeling or animation and all that stuff. लेकिन मेरा स्टोरी बोर्ड्स देख के दैट गाइड सेड दैट ओके फाइन मैं तुमको स्टोरी बोर्ड टीम के लिए रिक्रूट करता हूँ. ठीक है, अब रिक्रूट हो गया एंड लाइक मैं तो बहुत खुश हो गया मैं कि लाइक वाह एकदम सही है स्टोरी बोर्डिंग में हो गया. एंड लाइक पता नहीं था इंडस्ट्री के बारे में. तो बाद में वहां पे जब पुणे गया दैट लाइक बिग एनिमेशन वाज इनिशियली कॉल्ड जादू वर्क्स इन बैंगलोर. So then Reliance picked it up and उसके बाद से they teamed up with ISKCON and then they started working on the Little Krishna series as well as the feature film / feature film. तो ठीक है पुणे पहुंचा मैं और वहाँ पे पहला जॉब था. एकदम लगा कि हाँ चलो वर्ल्ड डोमिनेशन का फेज अभी स्टार्ट होगा. एकदम होता है ना लाइक वो टिपिकल 22-year-old ओवर कॉन्फिडेंस के साथ तुम जाते हो. बाद में वहां पे देखा स्टोरी बोर्डिंग इन एनिमेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी बोर्डिंग फॉर लाइव एक्शन. स्टोरी बोर्डिंग इन एनिमेशन यूजुअली पीपल लुक फॉर 2D animation background or at least 2D animation training क्योंकि essentially you are making a very like a draft version of the final feature film. और मेरा sketching actually उतना खास नहीं था. I used to sketch decently but I realized that the moment you animation studio के storyboarding team में अगर जाना है like you need damn good sketching skills.
मतलब gesture drawing like and like I mean anatomy and all that stuff like बहुत बहुत सही चाहिए वहाँ पे और मेरा मतलब नहीं था वो and suddenly मतलब देख रहा हूँ यहाँ पे मतलब सीरीज का काम एपिसोड्स का काम चालू हो गया है and like you are the fresher there so obviously like I was a trainee and because I was like practicing my sketching at the same time so what they did was they put me at the back end of the process so मतलब senior artists सब sketch करते थे and then like they would give it to me so what I would do is I would compose it the foreground background and then I would like sort of write a description ताकि मतलब जब भी animatic में जाएगा तो सबके लिए मतलब reference point रहेगा like so for anyone like who's venturing into storyboarding or wants to get into storyboarding I would say that like, rather than having perfect drawings I would actually say that it is good to have a like a good skill set in say gesture drawing anatomy मतलब portraits नहीं चाहिए fine art वाला sketches नहीं चाहिए वहाँ पे like the unstoppable combination is to have both storytelling as well as sketching skills like sketching skills good enough for storyboarding मतलब उससे ज्यादा नहीं चाहिए like I mean naturally talented हो तो अलग बात है लेकिन gesture drawing अगर आता है composition अगर आता है मतलब you have like a general like sense of anatomy मतलब ऐसा नहीं कि nose एकदम इतना detail में बना दिया that does not work for a storyboard like storyboarding is basically storytelling were you working on the animated series or were you working on the feature film as well I worked on both the animated series as well as the feature film दोनों में end credit में नाम है so that was like first time मतलब किसी film पे या किसी series पे मतलब नाम आया हुआ था so it was like a pretty big moment for me सबसे पहली चीज जो जरूरत है आपको वो है you need to take the camera and start recording you need to take the camera you need to understand the basics take the camera and start recording and that's how आपकी journey start होती है चलो ठीक है but the real question is and this is where I will join this question along with your first project as well ठीक है this is how the journey starts लेकिन हम audience को viewers को कहाँ से लाएं how can I make others watch what I have made okay that's a very interesting question because my skill set automatically does not really translate well for audience building because like I'm generally a very shy awkward personality मतलब किसी को अगर बताना है कि भाई मेरा पिक्चर देख लो तो मतलब इतनी शर्म आ जाती है मतलब फिल्म बनाने के टाइम पे बहुत जोश रहता है कि हाँ चलो पिक्चर बनाते हैं तो बनाने के बाद यार थोड़ा टाइम मिलेगा तो देख लेगा तो बहुत मतलब एकदम बहुत सही रहेगा तो एकदम ऐसा मोड में चले जाता हूँ कि मतलब सामने वाला तो सोचेगा कि मैंने एकदम रद्दी पिक्चर बनाई है एंड लाइक आई एम बेगिंग फॉर लाइक 5 minutes of his time or 30 minutes of his time so I think that like having said that I also feel that a lot of it comes down to conditioning right from childhood if you have been allowed to express yourselves freely at home or like in school and all ऑटोमेटिकली एक टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट यू नो व्हाट हाँ ठीक है आज मैंने 5 मिनट की फिल्म बनाई है मैं स्क्रीन कर देता हूँ क्लासेस हो जाता है तो चलो यार मतलब 5 मिनट लैपटॉप को प्रोजेक्टर के साथ हुकअप कर दो और लाइक यू जस्ट स्क्रीन द फिल्म सो आई वुड से दैट फॉर एनीवन एक तो होता है कि इट्स वेरी हार्ड टू लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इवन स्टार्ट ऑफ विद मेकिंग दैट शॉर्ट फिल्म सब लोग बोलते हैं कि लाइक नहीं हाँ करेंगे मतलब दे वेट फॉर द राइट कंडीशंस दे वेट फॉर द राइट टाइम दे वेट फॉर द राइट मनी वैसे नहीं होता है लाइक यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग इट स्टार्ट बिल्डिंग एन ऑडियंस नेटवर्क पहले अपने क्लासमेट्स को ही दिखा दो मतलब 3-4 लोग भी हैं मतलब तो दिखा दो कॉलेज में हो तो कॉलेज में मतलब get some permission and like screen it to a lot more people. And a lot of people do not put up their films online. Like they think that मतलब बहुत वेट करते हैं और वेट करने के बाद लगता है कि यार ये तो बहुत एकदम रद्दी पिक्चर है तो मैं नहीं डालने वाला हूँ. But I don't think so that works. I think you should put the moment to finish your film, short film, you should put it up online. Santosh,
tell the viewers about the very first project that you had, a live action project. I know about it, मुझे पता है, मैंने देखा है. Of course, that was quite a long time ago. Well, not so long time ago, but हाँ, मैंने देखा है वो. Please, for the viewers, आप थोड़ा उस बारे में introduction दो. Okay, so 2010 में like I was going through like a horrible time. मतलब हर साल तो horrible time होता ही है, लेकिन वो कुछ साल ऐसे होते हैं कुछ ज्यादा ही horrible हो जाता है. So 2010 was like one of those years where I was going through unemployment and एक बड़ा अजीब सा मतलब personal like problems था. So like, there was a lot of like stress in my head, and I ended up writing a hostage drama, like a kidnapping drama. And so I was very much into pulp type of stories then, like the crime thrillers like David Fincher, वो सब मतलब बहुत देखता था उस time पे. So I sort of like used that as a template and I like wrote the script. So the script was actually like quite, I mean the whoever I had like, and but again like I did not really have a great network. So जो भी मतलब दोस्त लोग मिले, like I would ask them to act, and because I was working in the radio station, so I was funding the film like from the salary. Okay. So हाँ, so जैसे नोलन फॉलोइंग के साथ किया था वैसे मैं वीकेंड्स में मतलब कभी कभार शूट कर लेता था. एक्टर्स लोग फ्री रहते थे, हाँ ठीक है मतलब ये वीकेंड पे शूट कर लेते हैं, वो सब हुआ. तो like because that process was so slow, it took me close to a year to shoot that, to make that film. My God. And हाँ मतलब yeah, like how long was the project? How long was the short film? the film was 30 minutes long. Okay. Technically, the number of shoot days were hardly like some like 10 or 14 shoot days maximum. Okay. But the problem was that when you're unable to pay actors and all, you really can't guarantee stuff. So मतलब 2-3 actors आए थे, like मतलब weekend कोई rehearsal हो पाता था, तो 3 weekend के बाद पता चलेगा नहीं ये actors ठीक नहीं है. So like that was 1 month gone in the process. तो ऐसे ही करके फिर मतलब 2-3 एक्टर ठीक निकले, लेकिन वो अपना खुद का हॉस्टेज ड्रामा में फंस गए. मतलब लाइक लिटरली वन ऑफ माय सपोज्ड कास्ट मेंबर्स गॉट किडनैप्ड. व्हाट? ही लिटरली गॉट किडनैप्ड. या लाइक सो वो मतलब अपने किसी दोस्त के इलोपिंग में हेल्प किया वो, एंड देन और वो दोस्त के वाइफ का लाइक फादर वाज सम एमएलए इन तमिलनाडु, एंड like those goons and all, they chased this guy all over the country, इसको kidnap करके रखे. Are you serious? And like I am serious, and like he was like वो मेरा engineering का classmate, मतलब मेरा roommate था, and like he was a bloody brilliant actor. मैं यहाँ पे मतलब सोच रहा हूँ कि कार्तिकेयन क्यों नहीं आ रहा है रिहर्सल पे, क्यों नहीं आ रहा, और वहाँ पे असली में वो किडनैप हुआ था. अरे मेरे को पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला. मैं उसको मेल भेजे जा रहा हूँ कि मतलब भाई वालों फोन किए जा रहा हूँ, मतलब नॉट रियलाइजिंग दैट द फोन वाज एक्चुअली विद हिज किडनैपर्स जो उसको चेस कर रहे थे. मतलब उनके पास था फोन, एंड आई वाज लिटरली लाइक विदाउट नोइंग आई वाज पुटिंग माय ओन लाइफ इन डेंजर बिकॉज दे वर चेजिंग लाइक पीपल लाइक हु न्यू हिम. तो वो सब था. सो हाँ बहुत ही, ये सब मुझे बाद में पता चला. ओके, सो लाइक दिस टुक अनदर 2 months ऑफ टाइम. तो फाइनली लाइक आई मैनेज्ड टू असेंबल सम पीपल. फिर मतलब the moment shooting was done, editing like I did the editing myself क्योंकि editor तो था, and उसके बाद से हाँ मतलब film complete किया, screen किया for the cast and crew and a lot of friends. So that was actually the first time I had like shown my film in public. I mean yeah, despite the fact that काफी सारे relatives वो सब थे, and I got a lot of like interesting reactions to the film. मतलब it looks like a first short film of course, मतलब पैची एक्टिंग है, बट हाँ मतलब 30 मिनट का फिल्म बनाया. लाइक आई स्टिल एम हैप्पी विद द फैक्ट दैट आई वाज एबल टू मेक दैट फिल्म. सो लाइक काफी कुछ सीखने को मिला. देन आई लाइक हैड अ पेड स्क्रीनिंग आल्सो, तो उसके लिए भी मतलब थोड़ा डिसेंट क्राउड आया. टाइम आउट बैंगलोर द मैगजीन लाइक दे थॉट इट वाज लाइक एन इंटरेस्टिंग फिल्म, तो दे पुट इट आउट ऑन लाइक कि हाँ ऑनलाइन है, विमियो पे देख लो. सो या इट वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. तो यूजुअली लोग मतलब 1-2 मिनट का बनाते हैं. अब मैं हूँ ना, मैं आशुतोष, मतलब मैं इंस्टीट्यूट्स का मैं आशुतोष गोवारिकर हूँ. मतलब पिकासो में भी मतलब लोग 1 मिनट का पिक्चर बनाते थे, मैं मतलब मेरे को 6 मिनट का पिक्चर बनाना है. ठीक है, मतलब लोग मतलब लिप सिंक नहीं रखते थे, नहीं मेरे को 10 कैरेक्टर्स के लिए वॉइस देना है.
मतलब कोई एनिमेटिक नहीं करेगा, नहीं मैं डार्क नाइट का ट्रेलर बनाऊंगा एनिमेटिक में। मतलब लाइव एक्शन में 3 मिनट का पिक्चर नहीं, मैं तो 30 मिनट का बनाऊंगा। एकदम आशुतोष गवारीकर हूँ मैं इसका। आई थिंक आई बाइट ऑफ अ लॉट मोर देन आई कैन चू एंड इट इज अ रिकरिंग थीम इन माय लाइफ। But nevertheless, it is to be said that Santa, you are doing an amazing job. I am a viewer, and of course I know you from the college days. तो कहीं ना कहीं एक होता है कि यार दोस्त की फिल्म है, यार दोस्त की फिल्म है, देखनी है, तो it's always good. Okay, now coming to a very interesting topic, and I'll start this topic with your production name, your production house. Please tell my viewers about it. और फिर हम उसके थोड़े से ओरिजिन स्टोरी पे जाएंगे. That will be interesting. So please enlighten my viewers about your production house. So my production label is called Vespertilio Motion Films. It's That's a very complicated. Goodbye, and nice seeing you. Okay, goodbye. My lawyer sort of said the same when I wanted to register for the trademark. So like I just like showed him the name, like I pushed the script towards him, and then he pushed it back to me. Like he said like तुम ही बता दो क्या है, मतलब क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पढ़ पाऊंगा इसको. So like actually 2008, 9, 10 में like, or in fact like till 2012 my production label was called Maniac Entertainment. Maniac Entertainment, yeah. Maniac Entertainment, मतलब काफी सिंपल सा नाम था, काफी मतलब लग रहा था कि हाँ रॉबर्ट रॉड्रिगेज का मतलब ऑफशूट टाइप का है Maniac Entertainment. इनफैक्ट जो मेरा पहला शॉर्ट फिल्म है like that came under the banner of Maniac Entertainment only. But after a point of time like मेरे को that was when I was also changing sensibilities in my head, like my tastes were like moving away from like a lot of commercial cinema and all. Yeah, so I wanted to like come up with like some sort of a very unique, when I say unique मतलब थोड़ा बहुत जो personal हो मेरे लिए. बहुत brainstorming किया मतलब एकदम कभी कभार मतलब सड़े हुए नाम आए, like वो मतलब आज शाम को लगता था कि हाँ मिल गया, अगले सुबह लगता था कैसा गंदा नाम चूज किया है types. And but I somewhere in the back of my head I probably was always interested in this name called Vespertilio. It's the name of the evening bat. And I say evening bat because I still am like, I mean, I'm a huge Batman fan. And yes, yeah, like... Here starts the part 2 of the video.